हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाया, सॉरी फॉर दैट। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैंने 11th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड का इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो ये 4th चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है और एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड भी किया हुआ है। आप जाकर वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। ओके, तो बेसिकली चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमने इंट्रोडक्शन देखा था, देन हमने 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है महाराष्ट्र के, वो भी देखा था। देन फीचर्स देखा था हमने। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने 3 चीज़ें आती हैं, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा सर्विस सेक्टर आता है। उसमें से हमने एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल में पढ़ाई की थी। तो सेकंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री के बारे में। ओके, तो बेसिकली इंडस्ट्री क्या है स्टूडेंट्स? जहाँ पर रॉ मटेरियल आता है फिनिश गुड में कन्वर्ट होने के लिए। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ पे प्लांटिंग होती है, तो प्लांटिंग के जो भी वुड लॉग्स है वो कहाँ पर शिफ्ट होकर आएंगे? इस इंडस्ट्री में, और वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होंगे। ओके, दिस इज नोन एज इंडस्ट्री। Okay, so Maharashtra is an industrial advanced state and which is play a main important role for the improving economic development. Okay, so basically they absorb potential things from the agriculture and then farming, agriculture sector और farming sector, और यहाँ पर उसे क्या किया जाता है? improve किया जाता है। for what purpose? generating higher then income, then higher productivity as well. Okay, so according to annual survey industry 2016-17, Maharashtra was a top position for the, you can say, industry. Okay, and the share of industry in the net value added was 18%, and Maharashtra was the first choice for domestic and as well as foreign investors. Okay, then the very important point is FDI, that is foreign direct investment. ये क्या है स्टूडेंट्स? जहाँ पर हमारे कंट्री में क्या होता है, अलग अलग डिफरेंस, आइदर डोमेस्टिक आइदर फॉरेन कंट्री से क्या करते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है। करेक्ट है। तो बेसिकली इन द अर्लियर 1990 द गवर्नमेंट वॉज स्टार्टेड अमेंडिंग द नॉर्म स्कोपिंग, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट दे फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. सो but just because of introducing Liberalization Act 1991, they cleared all the path for the trade of goods and services throughout the world. So Maharashtra has been consistently ranked as the number 1 destination for the investment, and the state has remained in the forefront in terms of FDI inflow in the country. So FDI inflow in the Maharashtra was till 2000 was till 2000 September 2017 was 6,11,760 crore, which is 34.1% of total FDI inflow in all India level. So general problem has facing in industrial sector as well. Number 1 is delay in government procedure. As you all know that कि government procedure is always late or delay, so that is why the number 1 problem is delay in government procedure. Number 2 is lack of opportunities for skill development, and the third one is lack of update technology. As always, many industry sector is still using outdated technology, so for that reason they still facing the lots of problems. So for that purpose they need to update their technology. Okay, lack of infrastructure facility as well, then lack of motivation to new entrepreneur, those who want to establish their career in a entrepreneurship, lack of development program as well. So government is taking a initiative for the resolve this all general problem according to economic survey of Maharashtra 2017-18. So number 1 is single window sale was initiated to provide all the clearance to existing and prospective investors. Then second one is Maharashtra industry trade and investment facilitation cell was introduced to provide online consolidated information. It means what? कि जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए उन्हें किसी भी सेंटर जाकर प्रोसेस करना पड़ता था, आज के टाइम में आप लोग क्या करते हो, आप ऑनलाइन उसे फिल करके क्या करते हो, आगे इनिशिएटिव कर सकते हो, फर्दर प्रोसीजर कर सकते हो. Okay, and the third one is award for export performance
space, rent subsidies are provided to small scale industry to encourage participation in international exhibition. Okay, then next one is creation of special economic zone to boost what? Boost the industrial growth. And the last and the least one is Maharashtra State Industrial Cluster Program, that is MSI CDP, is being implemented all the overall state to develop what? For small farmers, then medium farmers and the micro entrepreneurs. Okay, so the third one is service sector. What is service sector? After the agriculture producing the raw material, then it convert into industry for finishing goods, and the last one is to distribute the service amongst the people, is called as service sector. Okay, so service sector consists of all insurance, tourism, retail, banking, education and social services. So service sector includes provision of service to business as well as final consumer. Okay, it mean what कि एक गुड्स रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स कन्वर्ट होने तक एंड देन फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने का जो काम है वो कौन करता है? सर्विस सेक्टर करता है. So service sector is the largest employment generating and the fastest growing sector of the economy, and the contribution of service sector to the gross state domestic product has been highest compared to the other state. Okay, and it was 54.5% during the 2017-18. The core area for development of service sector include fintech, IT, startup, cloud computing and electric vehicles, defense, tourism, private universities. Government has also tried to expand their service sector by in two tier cities. Okay, let's understand what is core area of service sector. Number one is infrastructure. What is infrastructure? In that we provide the you produce the goods and services. Okay, so number two is social infrastructure. It means in that one we provide services to the people. So what is infrastructure? Infrastructure is the basic requirement for economic development. A sound infrastructural foundation is the key of overall social economic development. So this act and magnet for attraction additional investment into the state and thus provide competitive edge to the other state as well. Adequate financial facilities are absolute necessity for rapid achievement of sustainable economic growth. What is sustainable economic growth? जब किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, यानी कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, तो जब ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज ओके. सो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं? इट फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Okay, so number one is increasing installed capacity of electricity generation. It means जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी उतने एग्रीकल्चर में बेनिफिट मिलेगा एंड एज वेल एज इंडस्ट्रीज में बेनिफिट मिलेगा. 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो अपना वो काम वो और रैपिड वे में और स्पीड वे में कर पाएंगे. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, न्यू नेटवर्क इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्राम फॉर एनर्जी कंजर्वेशन. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज एंड अंडर डेवलपिंग एरियाज. देन इम्प्रूव नेटवर्क इम्प्रूव, यानी कि इंटरनेट की एंड एज वेल एज कॉल कनेक्टिविटी ईच एंड एवरी विलेज में पहुंचनी चाहिए. प्रोग्राम फॉर एनर्जी कन्वर्जेशन, इट मीन कि एनर्जी को भी सेव करना फॉर फर्दर कंजम्पशन. देन मॉडिफाइड direct benefit transfer scheme to LPG customer in the state. Then road development plan being implemented. Target was to develop 3.37 lakh of kilometer of road. Then metro railway has started at Mumbai and Nagpur for the development of infrastructure. Okay, the next sixth one is Maharashtra port. What is port? That it means bandargah development policy was constituted for integrated development of port. It means earlier times people used to transport their goods with the using of waterway.
Okay, for that purpose they need lots of port. So right now state government is promoting Sagarmala program launching by the central government of for port lead development. And the last one is internet subscriber base was 5.45 crore in Maharashtra as on 30th March 30th September 2017, which is the highest among the all over the state. And the second one is social infrastructure. What is social infrastructure? Social infrastructure is also one of the important components of economy because it improves the quality of human life as well as stimulate the economic development. It is not only improve the quality but also gives the power to produce knowledge. Social infrastructure include literacy program, education, public health, housing, drinking water and sanitation. ओके तो इसके आगे का जो भी है वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच एवरीवन.